Okay. So in the last session, we completed till house property. So whenever you open your file, you every time get this message. So just click OK. So it's take a little bit time in loading it. So this is we have done the general information we have already entered. Then salary also we completed, right? Then also house property. It was a self-occupied property, so only interest was allowed. Now the next one is about the other sources. Okay, so now we'll go to our question. Other sources. So income details mein, this is the section that income from other sources. So first one is bank interest, which is on fixed deposit and it is net of TDS. So in your income tax returns, there is a separate section for TDS, that is tax deducted at source. At the time of selection of the tabs as well, we have selected a tab for TDS, if you remember. एक TDS का already यहाँ पे देखो एक tab है, just see the cursor. ठीक है, TDS का already एक tab है, इसलिए हमें अपनी जो incomes लेनी है, we have to take this as a gross figure and not net figure, because when we move to the TDS tab, where we will write about the tax which is deducted on this particular income. ठीक है, so अभी हमें सिर्फ gross लेना है. So we know that after deducting the 10%, that is 100 minus 10%, 90%. So for 90%, it is 9 lakh. So what will be it be for 100%? 9 lakh divided by 90%. So it will be 10 lakh. Okay. So everybody, this point should be clear, because many of times this type of a question comes up in which the net figures are given. So whenever you are writing about the heads of income, you always have to take gross figures, never ever take the net figure. So 10 lakh. So this is how your sheet looks like. So that is income from other sources, and these are the gross income. So देखो यहाँ पे भी already it is mentioned that these incomes are gross. So अच्छे से if you read every detail, so it is very self-explanatory. Then this is dividend. We don't have any dividends. Then this is the interest figure. And interest figure कहाँ है हमारा? From savings bank, right? This is bank interest. So this is from deposits, either in bank or post office or cooperatives. So our particular income will come under this section. So here we will write the gross figure, that is 10 lakhs. So just type it 10 lakhs. Okay, 10 lakhs done. The next is interest on saving bank account. So under this, nothing is mentioned. Okay, TDS, nothing is mentioned. So we'll assume that this is a gross figure. So 34,900. 34,900. Then apart from that, we don't have any other income under this head. So this is it. Okay, you don't have to add anything now. So everything we'll keep this as blank. Now we'll move to little bit right in order to just validate it. So it's showing that sheet OS other sources is okay. Just press OK and move to next. And at the same time, make a habit of saving your file at every step. So now we have moved to the next step. We'll just do Control S. Okay, it's of time, but we are already at least sure that whatever work we have done, it is saved. Okay, so just do Control S. So whenever we will move to the next tab, we'll just do Control S to save this file. Okay. Now this is the sheet. So this sheet was automatically selected. We did not deselect it. So every cell under this particular tab is white. So we don't have to write anything. We just have to move to the next tab. Okay. ये automatically थी, हमारे option नहीं था इस वाले में. ठीक है. So we'll just move to the next tab. Okay. Now we are at this tab which have the details of investment. Okay, so under this particular section, if you read the question, we just have the asset details, and the assessee has not invested anywhere. He has not made any kind of investments.
If you recall, there are these 54, 54B, F, these all are the investments under capital gains, right? And short-term capital gains se bachne ke liye we had this 54B section. So we have no such investment, so we'll just move to next. Okay, next, this is 80D. 80D is for the deductions for the health insurance taken for self or for the parents, right? So section D may definitely there is something which is medical insurance premium for self. So first of all, it is asking about whether you or any of your family member, excluding parents, is a senior citizen. First of all, now we have to check the age of the assessee. Okay, now you'll just move to the first page of this question and see his date of birth. So date of birth is 11th November 1952. So when you do it, so it is definitely more than 60. So 48 plus 20 नहीं होगा अभी 5 दिन और है उसे 20 होने में. So in short it is 68, 67 to 68. ठीक है, so he is definitely a senior, he is a senior citizen. Okay, so for that we have to select yes. Now it is loading. So in case he is not senior citizen, we will make it no. But in this case, in our question, the assessee is senior citizen. So the self and family. So what is the investment that he has made? He has made this insurance premium for self of rupees 40,000. So just type 40,000 here. No, not here. Sorry, here. This is the health insurance. So this is 40,000. Okay, you have to write here. You have to check each and every cell just to make sure that whenever you are entering the value, it is corresponding to the exact variable for that we are entering the value. So under self and family, we have entered under the health insurance. अगर यहाँ आप नो कर देते तो ये यहाँ पे आप वैल्यू डालते, बट अभी इसने ऑटोमेटिकली ये सारे डीसिलेक्ट कर दिए हैं because this is there are macros and the Excel now knows that this assessee is senior citizen. Okay, so now Ma'am, health it is saying insurance, it is a protected. and then the next one is whether any one of your parents is a senior citizen. So this is a big yes because the person himself is a senior citizen. So we'll make this as yes. ठीक है, अगर यहाँ पे देखो अगर उसने पेरेंट्स के लिए नहीं लिया होता तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स. ठीक है, सो यहाँ पे हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर उसने पेमेंट की हुई है और अगर उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो हम नो करेंगे, अगर वो हैं यस, और अगर उसने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लिया ही नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए जिसके लिए वो क्लेम कर रहा है तो वहां पे वील सिलेक्ट दिस नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स. अभी यस है हमारा. ठीक है, again the medical insurance he has taken, so this is health insurance, so we'll write the value here as 10,000. Okay, so this is automatically generated. That is why I said that whenever you go through the deductions, just do the introductory part, that which deduction belongs to which. You don't have to actually memorize about the maximum or the minimum limits which are there in your IT Act. You just have to enter the values. It will take it on its own. For example, if I change this to 1 lakh, it will take the maximum as 50,000 only. Okay, so your duty is to just enter the exact value which is there in the question. You don't have to memorize that whatever the maximum limit is there, I'll just write that. You don't have to do that. Whatever the exact values are there, only that you have to add. So इसमें 40,000 थी self के लिए, parents के लिए it was 10,000. So बस हमने ये values डाल दी. Now again, इसके अलावा 80D में हमारी बस एक यही थी. 80D में आपका मेडिकल इंश्योरेंस ही आता है. So we just validate it now. It is saying that she 80D is okay. Now we'll move to next. Okay, and Control S. हर शीट के बाद हर टैब पे मूव करते we'll do Control S. So any doubts to anyone so far? सब मेरे साथ चल रहे हैं ना? Everyone should be at this tab, AMT.
Okay, perfect. Now there is no green cell, so we don't have to do anything. We'll just move to the next tab. Then this is deductions under chapter 6A. So this is your deductions under section 80C to 80U. Now this, whether you have made any investment deposit payments between 1st April 2020 to 31st July 2020 for the purpose of claiming any deductions under part B of the chapter this, basically usually the valid period for making any kind of investments which can be claimed as a deductions later on, that should be in the previous year. That is for, अगर मैं previous year 1920 की बात करूँ तो 1st April 19 से 31st March 2020. But now due to this pandemic, the government has increased the limit that in case the assessee is not able to make the investments in order to claim the deduction, he can do so. So for that, they extend the period for another 3 months. Okay, April, May, June, July. In fact, for 4 months. इन्होंने period government ने increase कर दिया था. Usually it never happen. बिकॉज हमेशा जो आपका 1 साल का पीरियड रहता है उसमें जो आप डिडक्शन जो इन्वेस्टमेंट्स करते हो वो आपको डिडक्शंस मिलती हैं. बट इस टाइम गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक और टेन्योर दिया था बिकॉज मार्च में लॉकडाउन हो गया था. सो काफी रिप्रेजेंटेशंस गई थी गवर्नमेंट के पास दैट वी वर नॉट एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर डिडक्शन. सो गवर्नमेंट इंक्रीज दैट पीरियड. ठीक है, कि अगर आप इस पीरियड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपकी प्रीवियस ईयर 1920 में डिडक्शंस मिल जाएंगी आपको. ठीक है, सो हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन अबाउट द एसएससी कि उसने इस ड्यूरेशन में कोई इन्वेस्टमेंट करी है. अगर ऐसा गिवन होता तो मैं यस कर देती, बट अभी मैं इसको नो कर रही हूँ. ठीक है, मेरे नो करते ही अपने आप लोडिंग हो रही है और शीट इज डन. ठीक है, एवरीवन शुड जस्ट मेक इट नो. Okay, now the next, these are the deductions. Now we'll go back to our question to see what all are the deductions he can claim. So first one is recognized provident fund. So recognized provident fund की deduction किस में आती है आपकी 80C में, right? जो recognized provident fund आता है. Then next है आपका LIC. LIC भी आपका 80C में आता है. Then PPF, that is 12,000. That also comes under your 80C, right? So हम इन तीनों का अमाउंट वहां पे डालेंगे. और अगर आप पढ़ोगे भी तो 80C में उन्होंने लिखा भी हुआ है that it includes life insurance premium, deferred annuity, contribution to provident fund, subscription to certain equity shares or debentures. This is basically your tax saving mutual funds. So there are a lot of equity shares for which the government has provided the tax exemption that you can save the tax. Okay. So अगर ऐसा कोई question होगा तो then that come under your 80C. So अभी हमारे ये तीनों के तीनों 80C में आ रहे हैं. So we'll just add the amount. So it is 97,000 plus 12,000. It is 1,09,000. So we'll just write 1,09,000 here. Okay. Every time you just have to write the exact figure. अगर ये 2 lakhs होता तो आपको 2 lakhs लिखनी थी. आपको अपना दिमाग नहीं लगाना था कि मैक्सिमम 1.5 लाख की ही मिलती है इसमें एग्जेम्पशन. आपको सिर्फ एग्जैक्ट फिगर्स करनी है क्योंकि ये एक्सेल शीट अपने आप आपको मैक्सिमम देगा. अगर आप यहाँ पे 2 lakhs कर दोगे तो वो 1,50,000 ही देगा. ठीक है, सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज टू जस्ट राइट द एग्जैक्ट फिगर्स व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, सो इट इज 1,09,000. Then next is NPS under section 80CCD 1B. So this is an additional deduction which is available to the assessee up to the limit of 50,000 rupees, right? हमने करी थी. So यहाँ पे 70,000 है, so we'll write 70,000. So just go to this particular row, contribution to pension scheme of central government, and here we'll write 70,000. So उसने अपने आप इसे 50,000 कर दिया. ठीक है. Next, this is done, this is done, this is all are done. So our deduction part is done. Okay, now we don't have to do anything on this particular tab. We'll just validate it. Okay, validation it is saying it is okay. So okay, and we'll move to the next tab. And then again we'll do Control S because we want to save our
work that whatever we have done till time. Ma'am. Okay, this is done. Now this is the assets and liabilities at the end of the year. So these are basically the details of the assets, and that is given in our question, right? At the very end, Yes, ma'am. these are the asset details of the assessee. So क्या क्या है? Jewelry है, held by assessee when originally acquired. This was the one. Then this is the market value. He has cash in hand. He has bank balance. Okay. So do you have any movable asset? Definitely he has, even though it is not mentioned, but he has a house. If you can recall, he has a self-occupied house, right? Income from house property जहां से इसकी आ रही है, उसमें लिखा हुआ है which is self-occupied at the address given below. ठीक है, so definitely he has a house which is immovable property. So we'll do this as yes here. ओके, यस में डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी? ही हैज अ हाउस, सो रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, राइट? दिया नहीं है बट आपको पता है कि एसएससी के पास एक घर है, ठीक है? सो फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर, सो दिस इज C1525. Just write whatever given in the question. Shivaji Nagar. Just type everything. Okay. Then it is area is city. We will write Jaipur. It is, again there is a drop down list, so select Rajasthan. Whenever there is a drop down list, select that particular one. So it is 27 Rajasthan. Country is automatic. Then pin code. So pin code is 302002. Okay. So this is the address. Cost, residential status. Just find out if there is any cost or not. Date of filing, details of banks, Jaipur. Income from house property, interest on borrowed capital, TDS. So there is no cost as such given, so we'll keep this as 0 only. There is no cost given, so we are keeping this as 0 only. अगर कोई value होती तो value लिख देते. अभी I am just keeping this as blank. Then next, this is about the movable assets. So first is about jewelry. So jewelry की cost कितनी है? So this is about the costs only, right? Jewelry is 8,000 worth of rupees. Then cash in hand. Sorry, these about assets and liabilities at the end of the year. So this is, let me just check whether it is asking for, I think it is only about the cost. Then bank value is 4,15,000. And next is cash in hand, which is 75,000. Okay, 75,000. He has no liability. 15,000 is bank balance, cash in hand 75,000, and jewelry held by the assessee. So we're just including the cost. We are not including the market value. Okay, because he is not selling anything. It is just the market value right now, but we are just telling the government that these are the assets and these are the cost. Okay, it is written also, it is the cost. So market value given is only just to confuse you people. Otherwise, this sheet is only for the cost. So whatever cost is involved, we just write the cost. Okay, so this is it. Now we'll validate it. Please fill all the details. Okay, area locality is this. Okay, so here also you have to write 0, 0, 0, 0, 0 as well as 0. Okay, कहीं कुछ भी blank नहीं छोड़ना है. Similarly, for that, write down anything.
area localities. और कोई बड़ा एड्रेस नहीं है क्या? Nagar here. Road, street, post office. Just let it validate. Okay, it's okay. Okay, so area, you just write whatever at the time of validation only you get to know if there is any missing fields. So when we did validation, they told us that you have to put 0 in every cell. You cannot keep that blank, so we just put the 0. And for that also, the sheet said that we have to write something in the area. So we have to. ठीक है? So सबका इतना part done हो गया. Validation, this is okay. Now we'll move to the next sheet and just do Control S again. Okay, now we don't have to write anything in this particular section. We'll come to this particular tab again, okay, because this is basically a tab which calculates the tax as well as generate the XML. But right now, I haven't completed it yet, so we'll just skipping this tab for a while. We are moving to the next tab, which is please verify the tax payment details, BSR code. Okay, that will do. So these are the advanced tax and self-assessment tax, and these are given in your question that the assessee has made certain kind of advance payments to the income tax authorities. Okay, so this is given in your question. So we'll move to a question. And these are the advanced tax and self-assessment tax. I guess ma'am की audio off है. Tax paid on. So I'm just changing the dates here because this previous question papers. This should be 19 and this should be 20. So whatever tax payments are given, we'll just write this as it is. Okay, so first is BSR code. So BSR code for bank is 000 1234. Okay. Then date of deposit. So it is 12/10/2019. So 12/10/2019. Then serial number of challan. So it is 00089. And the amount is 23,000. Hello? Oh. Okay. अच्छा बोलो बच्चों क्या डाउट आ रहा है? सॉरी मेरा ना लैपटॉप का जो वो था स्पीकर था दैट वाज ऑन ऑफ मोड इसलिए आई कुडंट हियर यू. यस टेल मी व्हाट आर द डाउट. मैम वो प्रीवियस ये एएल वाली पे वापस ले जाओ एक बारी. असेट्स एंड लायबिलिटीज वाली पे. ठीक है. यहाँ पे we have entered the cost only for jewelry, for bank and for cash in hand. For the other parts we have just put 0 because it is not allowing us to move to the next tab bring the 0 values. So 0 just is for indicating the income tax authorities that we don't have such kind of assets with us. मैम आपने 75,000 शायद कैश इन हैंड वाला कॉलम में नहीं लिखा है. अच्छा ओके सॉरी. या thank you, it should be here. Yes. Okay, I'll just do Control S now. Ma'am. Yes. मैम ATC की डिवीजन नहीं बताने की क्या क्या है उसमें? नहीं ATC बेटा एक कंसोलिडेटेड होता है. अगर आप ऑनलाइन भी भरोगे ना तो ATC में जितना भी होता है दैट इज अ कंसोलिडेटेड फिगर. अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैं जस्ट वैलिडेट कर लूँ जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स डिडक्शंस हैं इसमें देखो 80C में कोई फर्दर आपके सब सेल्स नहीं है. देयर इज ओनली वन सेल सो यू हैव टू राइट अ कंसोलिडेटेड फिगर ओनली. अदरवाइज जब एक्सेल में ऑप्शन ही नहीं है तो आप डिफरेंट वैल्यूज कैसे लिख दोगे? 80C का बस एक ही सेल है. इट मींस यू हैव टू ऐड योर वैल्यूज ऑन योर ओन एंड यू जस्ट हैव टू राइट इट.
और हमने 80D किया था, इसी वजह से यहाँ पे 80D का जो वहां हमने किया था वो यहाँ पे नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली वहां से आ गया है, क्योंकि इसकी एक अलग टैब होती है। इसमें एक फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है डिपार्टमेंट को, दैट वेदर दिस पर्सन इज सीनियर सिटीजन और नॉट, और हिज पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन और नॉट। तो इसी वजह से इसकी एक सेपरेट शीट होती है, तो ऑटोमेटिकली वो शीट से आ गया, उसके अलावा जितने भी थे वो वी हैव डन। ठीक है, सबका यहां तक हो गया, ये भी हो जाना चाहिए सबका। नाउ वी आर इन दिस पर्टिकुलर मैम पेज। मैम यस बेटा। मैम एक बार एएल शीट में ले जाना। यस मैम मैम एल शीट वैलिडेट नहीं हो रही। यस मैम, वैलिडेट करने में डिटेल्स ऑफ इमूवेबल एसेट्स का मैम अमाउंट भी पूछ रहा है। तो जीरो कर दो ना, आई टोल्ड यू ना, बिकॉज द अमाउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कीप दिस मैम एज जीरो जीरो। कर दिया सारी दैट फील्ड्स इट में। इज, मैम जीरो कर दिया सारी मैम फील्ड्स में, स्टिल नहीं हाँ हो रही, उसके स्टिल वही आ बाद रहा है। भी नहीं हो रहा वैलिडेट। यहाँ पे भी जीरो कर दिया, लाइबिलिटीज इन रिलेशन टू असेट्स, सबसे एंड में यस मैम। द लास्ट रो, ये भी जीरो कर दिया, ये तीनों जीरो कर दिए, ये भी दोनों कर दिए। राजस्थान में जब सिलेक्ट किया था तो ड्रॉप डाउन से किया था, यस मैम। और यहाँ पे भी यस किया है। यस मैम। अच्छा एक काम करो, दोबारा ऊपर जाओ और ऊपर दोबारा यस करो, एक बार ये फिर से रिफ्रेश होगी पूरी शीट, उसके बाद फिर से ऐड करो सारी वैल्यूज। वेट करो जब तक वो लोडिंग पार्ट हो रहा है। मैम ठीक है, एक बार आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स, यहाँ पे यस करो, जस्ट वेट टिल दिस लोडिंग इज डन, उसके बाद एंटर दीज डिटेल्स, ये सारी टाइप होंगी अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट, बस ये यू हैव टू सिलेक्ट, अमाउंट यू हैव टू राइट 0, एंड उसके बाद ये सारे लिखना और 0 0 भी लिखने। तो जल्दी 2 मिनट्स में करो इसे। मैम जो ये पार्ट बी टीआई वाला जो टैब है, इसमें मैम नीचे जाके बैंक डिटेल्स भी डालनी है। कौन से वाला? जो नेक्स्ट वाला जो टैब है, जो पार्ट बी टीआई वाला जो टैब है, अभी मैंने वो छोड़ा है, अभी छोड़ा है मैंने, उस पे आ जाएगा, फिर we'll check what all are the missing details। ठीक है, don't do this, अभी उस पे हम दोबारा वापस आएंगे। ओके। यस मैम इट्स डन, हो गया। हो गया, सबका हो गया। यस मैम। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी प्रॉब्लम होगी, इट मींस यू हैव टू डू इट अगेन, सो दैट, क्योंकि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, द शीट इज स्टिल लोडिंग बट you start entering the values into the other cell, you don't wait, that is why these kinds of problems arises। So whenever there is a circle sign, you have to wait, don't do anything till that point of time। ठीक है, now we have moved to the IT tab, and यहाँ पे we are writing about all this advanced payment details। okay, so यहाँ पे हमारा यहाँ तक हो गया था। amount कितना था? amount is 23,000। okay, next BSR code is same, then the date of deposit, so the deposit date is 21st May 2020, serial number of the challan, so it is 00091, 17,000। okay, so this is it, we don't have any other advance payment, so we'll just write the 2 entries which is given in your question, and after entering it we just validate it। okay, it is saying that sheet IT is okay। ठीक है, okay करने के बाद just do control S। ठीक है, एक बार हम यहाँ तक अपना काम फिर से सेव कर लेंगे। okay, now we'll move to the
next tab, which is tax deducted at source, and we have such information, right? So tax deducted at source may we have these two. First, by the employer, because the employer always makes the tax deduction while making the payments, as well as the bank. Bank is also one of the responsible. They have this responsibility to deduct the tax before giving us the interest payment. So this is 1 lakh and this is 18 lakh. So we'll write both the details. So first is the TAN number. Okay. So as per form 16 issued by the employers, so you आपके क्वेश्चन में तो डायरेक्टली होगा, बट जब आप काम करने लगोगे जब फॉर्म 16 में आपकी सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है. सो टैन ऑफ द एम्प्लॉयर, इट इज RTKA 88760A. Okay. Name of the employer. So name of the employer we can get from our first page. So it is Gurmeet Computers Limited. Okay, so it is Gurmeet Computers Limited. Okay. Now the next one is income chargeable under salaries. So this is not given in your question. This we'll take direct from the salary tab that we have completed in our previous class. Okay, we'll go to the salary tab, and at the very last cell we select this value, that is income chargeable under the head salary. So it is 82,67,000. Okay, 82,67,000. So 82,76,000. This is our income chargeable under the head salaries. Okay, and how much tax he has deducted? He has already deducted 76,000. 67,000 and 76,000. Achha, sorry, it is 67, right? So it is 67,000. So इसका मतलब ये है in short कि इतना एम्प्लॉई को मिला है पैसा जिसपे उसको टैक्स देना है. अब 82,67,000 पे उसको अब पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है इस अमाउंट पे, और जिसमें से ऑलरेडी जो एम्प्लॉयर है वो 18 लाख कि इस पे जो टैक्स बनता है उसमें से 18 लाख वो ऑलरेडी पे कर चुका है. ओके. So income chargeable under the head salary we have taken from the salary tab, and this is the TDS which the employer has deducted. So this is about the employer. ठीक है. Next one is not from the employer side, this is from the bank side. Okay, so bank वाला हम यहाँ पे रखेंगे. Okay, so this is for self. So PAN of other person if TDS credited to other person. एक second रुको. Let me just read. As per form 16B deducted. Okay, so we'll write about the bank in this only. So it is related to self. Tax deduction account number. So it is asking about the TAN. So TAN for the bank, it is YUI Q65490H. So YUI Q65490H. So this is that financial year in which tax is deducted. So it is always for the previous year of the relevant previous year. So we are calculating it for the 1920. So it is always 1 year previous to that. So we always select for this, whatever question you will get, you always have to select the previous year. That previous year, relevant previous year. So it is 18. So what is the TDS that is brought forward? This is 1 lakh, right?
It is 1 lakh. So this is, we don't have any such information. So we have just entered the information which is given, that it is for self. This was the TAN number, it was related to 18, and this was the TDS which the bank has deducted. Okay. Now we'll do validation to see just whether it is. Acha, invalid TAN at serial number 1. Okay. In schedule TDS2, please enter valid TAN in own hands is mandatory. In schedule TDS2, okay, enter all mandatory details in schedule. अच्छा, so सबसे पहले तो वो serial number 1 का ये गलत बता रहा है. So RT888760A, और शायद इससे पहले भी हमने TAN नंबर कहीं डाला है एम्प्लॉयर का. So this is RTKA888760A. It is fine. Then why it is asking so? मैम ये TDS 2 का कह रहा है. TDS 1 का भी कह रहा है. देखो, अच्छा TDS 2 का ही ओके. So TDS 2 का ये तो TAN तो सही है. It is YU. ये I है या 1 है ये? I think it is I only. Q65490H. I think it is 1 तो नहीं है ये. L क्योंकि ऐसा भी है ना, ये टैन पैन ये सब सबकी यूनिक आइडेंटिफिकेशंस होती हैं. सबकी यही इशू आ रहा है इस टाइम पे. Yes, ma'am. 90. This is also 0. It is not O, I guess. H. This is fine. Financial is also fine. Unclaimed. This. Achha, okay. This is deducted TDS for current financial year. Deducted in own hands. It is 0. Then nothing is claimed. Nothing is claimed in the hands of spouse. Okay, cancel. So we are just keeping this as blank. Let me validate it again and let me see what is the issue. Invalid TAN at serial number 1 in schedule. Please enter valid TAN. Unclaimed TDS brought forward and details of TDS accrual should be provided in different rows in schedule. Okay, PAN and this. So how can I write values? And then just wait. Let me just check it. What is the issue we are getting? क्योंकि टैन तो मैंने बिल्कुल सही जगह लिखा है. एक मिनट में बुक से कोई और टैन देखती हूँ, अगर उससे सॉल्व हो जाए तो. अच्छा, ये कहीं इस वजह से तो नहीं आ रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ बैंक की डिटेल्स नहीं लिखी हैं? कुछ ऐसा तो नहीं है? लेट मी जस्ट सी. Details of the bank account held at any time during the previous year. ये तो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं. तो पहले बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल लेते हैं. एक बार इस शीट पे आ जाना, पार्ट बी पे. Might be this is required, but इसमें कुछ इंटर रिलेशन तो है नहीं. चलो डाल देते हैं जब भी. IFS कोड इज HDF. सारे इस टैब पे आके एक बार IFSC को बैंक की डिटेल्स डाल लो. सो HDFC 0005422. Let it load it completely. It अपने आप आ गया HDFC बैंक.
account number is 65478. Sorry, 65478123456. Okay, it is 65478123456. And यहाँ पे we'll check. ठीक है? That we want to get a refund in this particular account only if we have any refund. Okay, so we have entered the bank details. Then कुछ और information है इसमें that we can add right now. मैम लास्ट में कुछ सेलेक्ट का ठीक है, then country of location at any time is hold or beneficiary any asset including any entity located outside India. नहीं, we'll just select no under this. ठीक है, कि कुछ भी उसकी बाहर की इनकम नहीं है, so we'll make it no. ठीक है, let me just validate it. It is okay. Now we'll do Control S. ठीक है, सेव कर लेते हैं. ठीक है, now we'll come to this TDS again. So जैसे हम इस पे आए, फिर से कुछ इसमें बोला है, एक सेकंड फिर से पढ़ते हैं. What is saying? TDS 2 invalid TAN at serial number 1. एक बार ही ना TDS 3 में डालकर देखते हैं. इसको ना सबको हटा दो यहाँ से. Make it as select. यहाँ से ये भी हटा दो. यहाँ से 18 भी सिलेक्ट कर दो, इसको भी, और इसको भी हटा दो. ठीक है, पूरी रो से just delete all the values and come here TDS 3. यहाँ पे एक बार डालकर देखते हैं. ठीक है, might be it is relevant here. Then नहीं, this is regarding to the campaign. क्योंकि first one is only about the employer. This is from salary and this is from the income. Just 2 minutes, okay? I am just figuring it out. Give me 2 minutes. Ma'am, Yes. मैम आई गेस जो TDS 2 वाली शीट में ये सेकंड वाला कॉलम है, इसमें सेल्फ आएगा, फिर मेरी वैलिडेट हो रही है. बेटा मैंने पहले सेल्फ ही किया था. मैम मेरी होगी वैलिडेट. सेल्फ ही किया. अच्छा, हो गई है. So might be let me do it again then. ऐसे किया है ना. This is financial year 18 and this is 1 lakh. मैम पहले आपने सेल्फ नहीं किया था आई गेस. नहीं बेटा, सेल्फ तो किया है मैंने. सेल्फ तो मैंने स्टार्टिंग में किया था, अभी भी नहीं है. या तो मैं इसको सिलेक्ट करके छोड़ दूं.
लेट मी डोंट डू दिस एनीथिंग, ऐसे करके ही करूं। नहीं, एंटर ऑल मैंडेटरी फील्ड्स इन दिस इज अ मैंडेटरी फील्ड। देखो मैंने सेल्फ पे किया, इट इज लोड, देन दिस tan is perfectly right, then claimed in own hands, this is 0, and this is मेरा इनवैलिड क्यों आ रहा है? चलो मैं कुछ और ही डाल के देखती हूँ, तो मेरे को एक बार बुक में से देखती। अभी भी इनवैलिड tan आ रहा है। क्या आता है फिर यहाँ पे? tan ऑफ द डिडक्टर तो हम बिल्कुल ठीक डाल रहे हैं। अब तो मैंने बुक में से उठाया है। बेटा आपका कैसे आ रहा है? आपने क्या किया है जिससे वैलिडेट हो रही है? मैम मैंने वही किया है, सेल्फ डाल दिया और टैन भी बिल्कुल करेक्ट डाला है, और फिर वो जो क्लेम्ड इन ओन हैंड्स है उसमें 0 डाल दिया, तो वैलिडेट हो रहा है मेरा। और किसी का हो रहा है वैलिडेट? नो मैम। किसी का भी नहीं हो रहा ना। चलो आई विल चेक इट। मैम नेट से दूसरा tan डाल देते हैं देख के। बेटा मैंने ना बुक से डाला है एक और दूसरा tan ना, मैम उससे भी नहीं हो रहा है ये। मैंने दूसरा नेट से देख के डाला था, मेरा वो उससे हो रहा है वैलिडेट। मैं चैट बॉक्स में उसको कॉपी कर दे देता हूँ। भेज दो एक बारी, करती हूँ ट्राई। कर लो फिर, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन फालतू में छूट रहा है। बिकॉज बेटा स्वास्थ्य इसलिए हम कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो डेफिनेटली owns that property. इनकम बोरोड कैपिटल भी है ना उसमें, मींस उसने उससे कुछ खर्चा भी किया है। मैम डाल दिया चैट बॉक्स में। The rest of the students, if they need, they can do it and let me know if it is working for them. Ma'am, it's working now. हम हो रहा है tan डाल के। Working है। बेटा मुझे verbally पहले because it's not coming up, might be there is anyone can tell me verbally. MUMH 03 Hmm.
189. 189. E. B? B E, for E, ball. E, E. 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 Okay. Okay. But ma'am, नहीं आ रहा मेरा तो जी ma'am, राइट ma'am, बोलो बेटा मैम ये आप डिफरेंट कैसे डाल सकते हो, क्योंकि सैलरी वाली शीट में हमने एम्प्लॉयर का डिफरेंट टैन डाला है और अगर यहाँ पे हम डिफरेंट डाल रहे हैं। This is not regarding to the employer. This is regarding employer का is matching employer में दिया. हाँ This जी हाँ is जी, regarding ओके to ओके the मैम, bank. गॉट इट. यस मैम, गॉट इट. But is it correct? Why it is not still validated? हम in my वैलिडेट case? नहीं होता. नहीं हो रही ना validate? मैम वो M मैम नहीं MUM है. है. मैम M है. MUM. 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 Okay. Let me see. Oh, perfect. Okay. So might be that this is a tan issue. Okay. हमारे concept में कोई problem नहीं है. We have to do it like that only. But there is a tan issue which is not accepting. ठीक है, और book में भी there are a lot of tans which are not accepting. I don't know why. So when this is done, we'll do control S. Our question is almost done. We just have to do one more thing. Okay, which is done. Which is left is your deductions. Deductions में आप लोगों ने मुझे बताया नहीं. There are two types of deductions, 80TTA and 80TB. In case the assessee receives any kind of interest from the fixed deposits or from the savings account, he gets certain kind of deductions. So if you go to your deductions, ठीक है, यहाँ पे देखो 80TTA, interest on saving banks account in other than resident senior citizen, and interest on deposits in case of resident senior citizen. So in this case, our assessee is a senior, right? So हमने नहीं किया ना, ये किसी ने मुझे बताया भी नहीं deductions का कि मैम हमारी एक और deduction बनती है. So when you move to the question, when you see Ma'am, your voice income is from other cracking. sources, he is getting and Ma'am. इसमें fixed deposit पे भी मिल रहा है, saving bank पे भी मिल रहा है. Ma'am, your voice is cracking a lot. Listen to me very carefully. Is it fine now? Ma'am, still cracking. I'm not speaking anything. Wait. I'm saying that these are the two types of income from other sources: interest and savings account, savings bank interest, and our assessee is a senior, right? So he can claim deductions under these two. Ma'am, Interest on savings. Yes, Peter. your voice is still cracking. I understand. मैम आपका स्क्रीन भी TDS पे है. Yes, ma'am. Is my voice clear now? Yes, ma'am. I am saying at the time of solving the question, we forgot to realize that this person is a senior citizen and he is earning interest from the fixed deposits from the bank, right? So he can claim the deduction under this section 80TTB, that is interest on deposits in case of resident senior citizen, right?
So इसको कितना मिल रहा है आपका डिपॉजिट्स पे? He is getting the interest of 9 lakh rupees. And that too, this is after TDS, right? So interest उसको कितना मिल रहा है? 10 lakh. 10 lakhs का इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, तो वो हम कैसे भूल सकते हैं कि उसको डिडक्शन मिल सकती है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 80TTB. वो अलग बात है कि मैक्सिमम लिमिट उसकी 50,000 की ही है, बट उसको तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना 10 लाख. तो वी हैव टू राइट दिस. ये चीज ना बहुत बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिख लो अपनी नोटबुक्स में कि ये चीज मिस नहीं करनी है एग्जाम में. ये जो डिडक्शन है 80TTA when the person is not senior citizen and 80TTB when the person is resident senior citizen. These are very two important deductions and I can give you a guarantee also that theory में भी जब आपका मेन एग्जाम होगा उसमें भी ये दोनों डिडक्शंस आएंगी. So ये अच्छे से याद कर लेना that whenever there is an interest from the bank, either in the form of a deposit or from the savings account, you always have to look for these two. ठीक है. और ये लास्ट ईयर ही आपकी नई डिडक्शंस आई हैं इनकम टैक्स में, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनर्स का, वो पक्का पूछेंगे इस चीज को. ठीक है. सो दिस इज डन. वी आर जस्ट वैलिडेटिंग इट अगेन. वी आर कंट्रोल. मैम विल अब हमारा जी मैम विल इट बी 10 लाख और 1 लाख? बेटा 10 लाख इंटरेस्ट इज ऑफ 10 लाख. पूरा 10 लाख का इंटरेस्ट है. ये ग्रॉस है ना. पूरा 10 लाख का हमारा इंटरेस्ट है. 1 लाख तो टैक्स कटा है उस पे, वो TDS है 1 लाख तो जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है. और इंटरेस्ट तो जो बैंक हमें दे रहा है वो 10 लाख दे रहा है ना मेरे अकाउंट में. 1 लाख रुपए काट के खुद से वो TDS पे कर रहा है, बट मेरे लिए तो पूरा इंटरेस्ट आ रहा है ना. When this is done, we have done Control S. Now everything is done. We'll go to the verification tab. Here we'll just complete the verification that Santosh Kumar is a son or daughter of. It will take just 5 minutes. Okay, I'm just completing your question. So I know it is stretching a bit, but jaldi se bas complete kar lete hain. ठीक है इसे. So his father name is Amitabh Kumar. So we'll just write Amitabh Kumar. ठीक है. And I'll say this is self because no one is making the return on my behalf. Okay, so this is done. We don't have to do anything now. We'll just validate it. We'll save it. We'll move to our this part B where we can calculate our tax. Okay, this is still loading, so I'm just taking time. Okay, here we'll click on this calculate tax. Now it is validating as well as it is calculating. ठीक है. So थोड़ा टाइम लगेगा. So it is saying that please ensure that the taxes are paid before the submission of the return, else your return will be treated as defective. Okay. Now everything is done. Our entire question is solved. And we don't have to do anything. It has calculated the entire tax, everything on its own. ठीक है. यहाँ पे now the person is still required to pay 10 lakhs 1,550 of rupees. So when he click on this e-pay tax, you will directly be taken to the portal of Income Tax Department where you can make the payment. Okay, so you don't have to do anything. This is done. Control S, your file is entirely saved, but in this practical paper you also have to generate the XML sheet. Okay, so after this is done, your calculation is done, your file is ready, you have to now click on generate XML. ठीक है. दोनों के मार्क्स है. XML का मेन तुम्हारा डॉक्यूमेंट जो है वो XML है, बट इस शीट को भी अच्छे से सेव करना. ठीक है. ओके, so this is your XML sheet. So यहाँ पे you will get this save XML. So when you click on this, आपसे पूछेगा नहीं, आपको बताएगा वो कि that this is the path on which your XML is saved. So every time you have to check, because in my case it is saved in my desktop folder only.
डेस्कटॉप पे मैंने इलस्ट्रेशन 1 का फोल्डर बनाया था, वहां पे जाके मेरी XML जनरेट हो गई है, ठीक है। सो ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग दिस फाइल, आई एम सेविंग एवरीथिंग till date, whatever work that I have done. It is done. Now I'm going to my desktop, and here when I am opening my illustration, I am getting both the files, Excel as well as XML document, and these two files everyone have to upload whenever we will conduct the practical paper. Both the files, XML as well as this Excel file with your roll numbers. Okay. सो देखो 2 दिन लग गए हमें एक क्वेश्चन करने में। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उस क्वेश्चन को मैं पहले ही शेयर कर दूंगी सो दैट जिसको जितना आता है वो एटलीस्ट उतना कर लेगा, ठीक है। सो विल ट्राई टू मेक श्योर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वील कंप्लीट द एंटायर क्वेश्चन इन 1 गो, ठीक है, क्योंकि इस बार ही टाइम लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा था करने के लिए, समझने के लिए भी था और काफी चीजें थी। सो आई एम जस्ट